अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं तत्र संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य निदेशकाः प्रोफेसर चांदकिरण सलूजा महोदयान् अहं प्रार्थये अस्माकं तत्र आगत्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। धन्यवादः। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम सादरं नमस्कारः। मंचोपस्थितः अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः सम्मान्यः श्रीनिवास जी, इटली देशतः आगतवन्तः मान्यः लुईन महोदयः, पुनः इग्नासियो महोदयः, यः सम्यक् रूपेण सुदेश दिशानिर्देशनं कृतवान्। सुदिश इति पूर्व अस्माकम् अस्य संस्थानस्य परिसरस्य निर्देशकः मम मित्रम्। अनेके जनाः वदन्ति यत् एकवारं तु रमेश जी, सुदेश जी, चांदकिरण जी, पुनः त्रिपाठी जी वयं मिलित्वा द्रष्टुम् इच्छामः। तस्य पृष्ठे कथा अस्ति, न वदिष्यामि। पुनः वैएस रमेश जी, साक्षात् काशीनाथ जी नेपालतः आगतवान्, आचार्यः, छात्रः। मम प्रसन्नता अस्ति अस्मिन् सन्दर्भे अहं तेषां पुरतः वदिष्यामि ये मूलतः अथवा यही मूलतः विषयः श्रोतव्यः आईटेक छात्राः। दशा दिशा रूपेण यदि वयं चिन्तयामः तदा आईटेक विषये चिन्तनीयं किमर्थम् आईटेक इति पाठ्यक्रमः आनीतः। यदा अहं पूर्वं नैनी विश्वविद्यालये पाठयामि स्म सदैव मम मनसि एकः प्रश्नः भवति स्म। अत्र संस्कृतम् एकः विषयः अस्ति, संस्कृतं कथं पाठनीयम्, परंतु तत्र तु संस्कृतस्य अनेके विश्वविद्यालयाः, किमर्थं न सम्पूर्णः पाठ्यक्रमः तत्र संस्कृत विश्वविद्यालयान् इति अधिकृत्य भवेत्। प्रयासः कृतः, चर्चा कृता, परिणामः पुरतः अस्ति। यः केवलम् एकः विषयः भवति स्म, अधुना सम्पूर्ण आईटेक धारा एव संस्कृतस्य धारा, आईटेक संस्कृतम् इति। दशा कीदृशी आसीत्, किम् अभवत्, अस्य संकेतः अपि यत्र प्राप्तः शिक्षानीतिः। प्रायः 20 संस्कृतस्य शब्दस्य प्रयोगः शिक्षानीतौ कृतः। More than 20 times the word has been, Sanskrit word has been used in this educational policy. चिन्तनीयं किमर्थं, किं कारणं, क्या है कारण उसका, what is the reason? तत्र अपि बिन्दुद्वयम् अस्ति। किमर्थं वारं वारं संस्कृतस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः, द्वितीयम् उद्देश्यानि कानि सन्ति। तया दृष्ट्या यदि वयं पश्यामः अस्माकं पुरतः अनेके बिन्दवः आगच्छन्ति। अधुना तु बहु कालः नास्ति, केवलं संकेतरूपेण अहं वदिष्यामि। प्रायः 7 बिन्दवः सन्ति यत्र अस्माभिः दिशारूपेण चिन्तनीयम्। वयं संस्कृतं पाठयामः, यदा वयं आईटेक कृत्वा गमिष्यामः, संस्कृतं पाठयामः, किं करिष्यामः तदा, किं पाठनीयं। केवलं पुस्तके ये पाठाः सन्ति अथवा पाठाः तु पुस्तकस्य केवलं साधनरूपेण सन्ति, परन्तु लक्ष्यम् अस्माकं किञ्चित् भिन्नं भवेत्। मम चिन्ता भवति यदा अहं केनापि सह चर्चां करोमि, कयापि सह चर्चां करोमि, तदा अनेके जनाः वदन्ति
महोदय, अहं तु साहित्यस्य छात्रः अस्मि, अतः व्याकरणं न जानामि। अहं तु ज्योतिषशास्त्रस्य अस्मि, अतः व्याकरणं न जानामि। अहं पृच्छामि, कस्मिन् शास्त्रे कस्मिन् शब्दे व्याकरणस्य प्रयोगः न कृतः अस्ति? पुनश्च किं सर्वेषां शास्त्राणां भाषा समाना अस्ति? व्याकरणस्य स्वरूपं भिन्नं। साहित्यं यदि वयं चिन्तयामः, अभिधा लक्षणा व्यञ्जना आगच्छति, परन्तु यदा ज्योतिष शास्त्रस्य चर्चां कुर्मः तदा लक्षणायाः व्यञ्जनायाः प्रयोगः यदि करिष्यामः, अर्थात् किं भविष्यति? चिन्तयन्तु। वास्तुशास्त्रे भाषायाः स्वरूपं किम्? अर्थात् किम् अस्माकम् अध्यापकाः इदं पाठयितुं सिद्धाः भविष्यन्ति यत् प्रत्येकं शास्त्रस्य भाषायाः स्वरूपं कथमस्ति, अस्य विश्लेषणं करणीयम्? अहं प्रायः पृच्छामि, किं कारणमस्ति प्रायः दर्शनशास्त्रस्य सूत्रेषु अथवा यत्र यत्र सूत्राणि स्टडी न्याय दर्शनम, अरे और छोड़ दीजिए, निरुक्त शास्त्र पढ़ दीजिए, पता लगेगा कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता है। प्रत्येकं शब्दः किमर्थं तत्र आनीतः, प्रत्येकं शब्दस्य कः भावः। प्रकृति उत्तरी, किसी कवि ने लिखा था, तुम आए बनकर सूत्रधार, कालिदास वदति, तुम आए बनकर सूत्रधार, ले दृश्यों का नूतन विधान, पृथ्वी बन गई रंगमंच और तुम कर उठे सरस गान। What a beauty! अधुना लिख्यते एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1987 तथा पूर्वमपि एयर पोल्यूशन एक्ट, नॉइज पोल्यूशन एक्ट, अनेक तत्र अधिनियमः सन्ति, परंतु धर्मशास्त्रों में जो लिखा गया है, चाणक्य जो लिखकर चले गए हैं, चाणक्य ने जो विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया है, किस बुद्धि वाला क्या होता है, उसे ही तो हम आज की शिक्षा शास्त्र में कहते हैं यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वैयक्तिक भेद हैं। अरे वैयक्तिक भेद तब तक नहीं पढ़ाए जा सकते जब तक आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ा जाएगा। कि मम अध्यापकः प्रोत्साहनं दास्यन्ते छात्रेभ्यः कथम अवगन्तव्यं, कथम पठितव्यं, ग्रंथ कैसे पढ़े जाएं, और भाष्य बताते हैं, हम किंचित संकेतम दत्तवान, कथम पठनीयम, जो ये बार बार कहा गया कि हाउ टू लर्न, कथम पठनीयम, कथम अवगंतव्यम, उसे टीका और भाष्य ग्रंथों के द्वारा समझा जाना चाहिए। अन्यः बिंदु केवल संक्षेपे वदिष्यामि। छात्र शिक्षा नीति पुनः पुनः वदति, द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी इज observe the child, recognize the energy, give respect to the energy, and then find the ways how to develop. कितना सुंदर है। प्रत्येकं छात्र पठितुं योग्यः अस्ति। साक्षात भगवती जी आगता। कथं प्रत्येकं छात्र पठितुं योग्यः अस्ति, कितना सुंदर कहा है। इसलिए कोई त्याग्य नहीं है, इसीलिए तो चाणक्य को लिखना पड़ गया, अयोग्यो पुरुषो नास्ति। प्रत्येकम छात्र से अवलोकनम करणीयम, यह हमारी शिक्षा शास्त्र की दिशा होनी चाहिए। यानी हम छात्रों का वर्गीकरण के, या व्हेन वी क्लासिफाई द स्टूडेंट्स वी शुड सी इन विच फील्ड दे आर, कस्मिन् क्षेत्रे ते विशेषज्ञाः सन्ति। मुझे लगता है अधुना एकस्यां कक्षायामपि यदि छात्राः सन्ति, तत्पश्चादपि तेषु कीदृशी भिन्नता अस्ति,
उस भिन्नता का स्वागत किया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारे शिक्षा शास्त्र कहते हैं, हमारा संस्कृत शास्त्र कहते हैं। एक अन्य बिंदु तत्र बहुत सुंदर रूपेण संस्कृते प्रायः शिक्षा नीतौ संस्कृतम् अधिकृत्य अस्ति, बहुत सोच समझकर कहा गया है। अद्यपि अहं कुलपति महोदयेन सह वाईएस रमेश महोदय अपि आसीत्, चर्चां करोमि स्म। यदा वयं संस्कृतं पाठयामः तदा स्वाभाविकमस्ति संस्कृतस्य माध्यमरूपेण प्रयोगः करणीयः भवेत्। संभाषण इसलिए है, संभाषण साधन है शास्त्रों की शास्त्रीय भाषा को सरल भाषा में समझाने का। वह लक्ष्य तब तक है यावत् पर्यन्तम् अस्माकं द्वारा तस्याः भाषायाः प्रयोगः न क्रियते, लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य तो अस्माकं शास्त्राणां पठनम् अस्ति। अहं चिन्तयामि तत्र अस्माभिः चिन्तनीयम् SSS and STS संस्कृतं संस्कृतं पुनः सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृतम्। मम कति छात्राः स्नातकोत्तरं कृत्वा अपि संस्कृतेन सम्यक् रूपेण लेखितुं सिद्धाः सन्ति। दशा यही है, न सन्ति। दिशा यही है, वहां ऐसा होना चाहिए। तस्य कृते अहं चिन्तयामि, तथा पूर्वम् एकं बिन्दुं वदामि। यदा संस्कृत युगम् आसीत्, जब संस्कृत का युग था, तब कहा जाता 12 वर्ष पर्यंतम पठ पुत्र व्याकरणम। संस्कृत युग में कहा गया 12 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन करो। स्टडी ग्रामर फॉर 12 इयर्स। आज हम 12 दिन भी नहीं पढ़ते। कैसे शास्त्रों को समझा जा सकता है? शिक्षा नीति ने बहुत आशा लगाई है कि संस्कृत के अध्यापक एम्बेसडर बनेंगे, परंतु तस्य कृते अनिवार्यमस्ति अस्माकं संस्कृत भाषायाम् अधिकारः भवेत्। अन्ते एकं बिन्दुं वदामि, यः समयः नास्ति, बातें बहुत लंबी हैं। प्रथम वारम् अस्यां शिक्षा नीतौ एकः विशिष्टः अध्यायः योजितः, 18 अध्यायः नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अर्थात रिसर्च कृते। और इस बात को उसने संस्कृत के संदर्भ में पहले अध्याय में परिचय में कहा है कि अस्माभिः संस्कृतस्य शास्त्रे अस्माभिः संस्कृत शास्त्राणि न केवलं पठितव्यानि तत् शोधः अपि करणीयः। और इसी का संकेत किया 18वें अध्याय में, वी नीड रिसर्च। लेकिन ये रिसर्च तो होता है ज्ञात ज्ञान को, संचित ज्ञान को हम कैसे नए संदर्भों में प्रयुक्त करेंगे। अद्य चर्चा भवति स्म कयापि सह। प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू था, तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि रिसर्च करने का प्रश्न उठाया। मैंने कहा प्रोफेसर का काम रिसर्च करना नहीं है, प्रोफेसर का काम सर्च करना है। सर्च होगी तो रिसर्च होगी ना। संधानम करणीयम, संकेतः प्रदत्तः वर्तते, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम प्रवचनम विद्यासंधि प्रवचनम संधानम। ज्ञान का नए संदर्भों में प्रयोग करना अनुसंधान होता है, लेकिन मूल ज्ञान को खोजना संधान होता है। उस संधान के लिए भाषा आनी चाहिए। तो मेरा एक ही सभी बिंदुओं का एक ही सार है। आज की दशा यह है, हम संस्कृत पढ़कर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से तत्र उपाधि प्राप्त अपि संस्कृतम न जानीमः। दशा यही है, दिशा हो। वयं यदि संस्कृतं पठितवन्तः संस्कृतेन कार्याणि करिष्यामः, संस्कृतेन वदिष्यामः, संस्कृतेन पठिष्यामः, संस्कृतेन लिखितान् ग्रन्थान् अवगमिष्यामः, और फिर
नैष्ठिक चरित्र का अनुपालन करते हुए अद्य हम लोइंगी महोदय से चर्चा करोमि स्म कि नैष्ठिक चरित्र की चर्चा करते हुए उसने कहा कि देखो पठने पढ़ाने के 5 सोपान हैं। अधीतिः, बोधः, अभ्यासः, प्रयोगः और प्रसारः। आज की दिशा में, आज के युग में इन 5 का प्रयोग नहीं है। हम केवल 3 तक सीमित हो गए हैं, क्योंकि पाठ योजना में सिखाया जाता है नो, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। मेरा मानना है हमारी पाठ योजनाओं, क्योंकि आईटेक के विद्यार्थी और छात्र अध्यापक बैठे हैं, मेरा मानना है इसे 5 सोपानों बदल दिया जाए। अधीतिः, नो द थिंग, बोधः, अंडरस्टैंड द थिंग। बहुत महाविद्वान बोध जी हमारे सामने बैठे हैं। यदा यदा पश्यामि तदा आनन्दम् अनुभवामि महोदय। तत्र भवान् मुम्बै मध्ये आसीत्, तत्र पठितवान् बहु। सुदेशजी अपि उक्तवान् आसीत् तस्मिन् काले। बोधः और फिर अभ्यासः, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और फिर प्रयोगः, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। देन प्रसारः, दूसरों के पढ़ाई। अंत में एक वचन कथन कहना बंद कीजिए। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारतीय ज्ञान परंपरा, कोई ज्ञान पुराना नहीं होता। जब जब उसकी आवश्यकता पड़ती है वह आधुनिक होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा भावी युगस्य प्रेरणा अस्ति, केवलं प्राचीनम् अस्ति युग कारणा, परंतु संदेश कारणा तो भावी युगस्य चेतना अस्ति। अस्माकं दशा वयं प्राचीनम् गच्छामः, दिशा भवेत् संस्कृतस्य ग्रंथेषु लिखितं ज्ञानं कदापि प्राचीनं न भवति, भावी युगस्य अस्ति। अस्माकं दिशा एतादृशी भवेत् इति उक्त्वा अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः। आचार्येभ्यः प्रोफेसर चांद किरण सलूजा महोदयेभ्यः धन्यवादाः। महोदय, भवन्तं दृष्ट्वा एवं भाति कश्चित् मुनिः वदति। एवं च रघुवंशे श्लोकः अस्ति, आकार सदृश प्रज्ञ, प्रज्ञया सदृशागमः, आगम सदृशारम्भः, आरम्भ सदृशोदयः। भवतां व्यक्तित्वं दृष्ट्वा एवं भाति कश्चित् ऋषि वदति। अनन्तरं च यदा भवन्तः वदति तदा भवतां प्रज्ञया ज्ञानं भवति। एवं च भवताम् आगमस्य ज्ञानं कथमस्ति इति शिक्षाग्रन्थं दृष्ट्वा वयम् अनुभवामः। अस्मिन्नेव क्रमे भवताम् उदयः कथं भवति यत् दिशानिर्देशं यथा दत्तमस्ति ग्रन्थेषु तथैव आगमसदृशारम्भः अस्ति। आरम्भसदृशोदयः अस्ति। यथा शिक्षानीतौ भवन्तः तथ्यानि उपस्थापयन्ति तदा अस्माकं यथा उदयाचले प्रातः शोभा भवति, तथैव शिक्षानीतौ अस्माकं संस्कृतेः उदयः दृश्यते। अतः भवतां वारं वारं कर्तलध्वनिना वयं स्वागतं कुर्मः, धन्यवादः। एवं च क्रमेऽस्मिन् अग्रिम महत्वपूर्ण कार्यक्रमः अस्ति अस्माकं MOU इति मेमोरेण्डम् ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एतत् कर्तुम् अहं निवेदयामि अस्माकम् आचार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार बुटोलिया महोदयान्। अस्तु, कालान्तरेण सम्प्रति अस्माकम् अधिमञ्चं विराजमानाः इटली देशवास्तव्याः प्रोफेसर लुइगो मिराग्लिया महोदयाः एवं च प्रोफेसर इग्नासियो आर्मेला चावेज महोदयाः। Now I am requesting Professor Luigo Miraglia to come and give a special guidance and blessing. Sir, you are founder and president of Academia Vivarium Nova. Dr. Anand sir, please translate this speech.
would like to introduce Professor Luigi Miraglia, who is the founder and president of the Accademia Vivarium Novum. He received his bachelor's degree in classical literature from the University Federico II of Naples, writing a thesis on ancient literature. He then received a doctorate in classical philology from the University of Salerno, working on the history of teaching methods of classical languages from the 3rd to the 18th century. He taught in state high schools, at the University of Salerno, and at the Pontifical Salesian University. In 1991, he founded the Accademia Vivarium Novum and started, in 1998, the project of an international campus for students coming from every part of the world, which is now settled in Villa Falconieri in Rome. He directs the academy where he teaches Neo-Latin literature from the 14th to the 19th centuries. He has participated in several international education and scientific programs in various European, Asian, and American countries. He has organized and directed the international conferences Latino Si, ma non così, Docere, Humanitas Literarum Vis, Monumenta Viaeque, and the Global Forum for Humanities through Classical Education. He is the author of many books and articles, primarily on the teaching of Latin and Greek, and on the history of pedagogy, and on Neo-Latin literature. He directs the academic journal Mantinea, and is an honorary member of the Academia Latinitati Fovendae and of the Pontificia Academia Latinitatis. So now we would like to invite him for his speech. He will be speaking in Latin and in Greek, and I will be translating into English. Thank you. Et ergo loquar Latine sicut postulatum est. I will speak in Latin as I am asked to. Et velim primum omnium gratia sagere omnibus praefectis huius universitatis et vice cancellario et ceteris magistratibus et professoribus qui nos invitaverunt. In fact, I'd like to thank all the professors and administrators of the university, especially the vice-chancellor and other professors who have invited us to this august event. Est nobis honori et gaudio, in modo hic versari, sed etiam posse subsignare hoc fedus, ex quo multa bona venire poterunt generi humano ut credo. It is an honor and a pleasure for us to be here, and not only to be here, also able to sign this wonderful memorandum of understanding from which many good things might come to the whole world. Et antequam venire in hoc auditorium colloquebar cum sapientissimo professore Vestro, et ille dicebat linguam sanscritam esse modum vivendi. Before I came to this auditorium this morning, I was speaking with the professor who just spoke before me. He was telling me that Sanskrit is not just a language, it is a way of life. Et esse clavem, qua quidem possimus intrare quasi in edes regias totius generis humani et discere multas disciplinas et artes. Not just a way of life, but also a key from which we can enter the palaces of knowledge and access different great knowledges of all the humankind. Ut credo idem dici potest etiam de lingua latina et greca, et hac de causa sensio has linguas esse quasi sorores et pertinere ad eandem familiam. And I think the same can be said for Latin and for ancient Greek, and that is why I think these languages are almost like sisters and that they belong to the same family. Non solum quod ab iisdem radicibus quasi provenerunt, sed etiam quod sunt lingue et sermones quibus nos possumus accedere ad universalem quandam sapientiam. Not just because they come from the same roots of the language, but also because they are, all three of them, the keys through which we can access a universal, unchanging knowledge. Grece et Latine sicut sanscritice, homines scripserunt litteras, scripserunt de artibus, de philosophia, de historia, de medicina, de naturalismus disciplinis, et hoc modo etiam nos docuerunt aliquid, non debere nos contineri tantum modo uni artissimae provinciae. In
And Latin, like in Sanskrit, people wrote not just about a few things, but about literature, about medicine, about philosophy, about astrology, about all of these different branches of knowledge. And therefore, just like Sanskrit, these languages teach us that we must not be contained in just one small province of the language, but we must unite all of them in a knowledge system. Optimis scriptores, qui scripserunt et sanscritice et grece et latine, coluerunt varias et differentes artes. So the great writers who wrote in Latin and in Greek and in Sanskrit, they did not just limit themselves to one province, but they wrote about different provinces, about various fields of knowledge at once. Seneca fuit filius rhetoris et optimus orator ipse, sed scripsit libros de philosophia, scripsit tragedias, quae sunt revera opera summe artis et summe diligentiae, et in etiam scripsit opus de naturali historia, et hoc modo nobis proposuit illam encyclopaidean, sicut Greci dicisolebant, id est illam orbicularem doctrinam, qua quidem homo, qui est unus, non potest dividi in varias partes, homo potest circumspectare et omnia cum intellegere, quae sunt circa se. So a great writer of Latin, Seneca, was the son of a great orator and a teacher of rhetorics, was himself a great orator and a rhetor, but he did not limit himself to that field. He wrote about philosophy, he wrote great tragedies and drama, he wrote also questions of the history of natural sciences, and therefore Seneca and other writers of Latin and Greek provide Sanskrit. And of Sanskrit, they provided this encyclopedic knowledge, which is to say that it is a knowledge from all sides, from in a round circle, and not, since a human being is not just one. It's an entire being that cannot be cut into separate pieces. In the same way, knowledge is round and all-seeing, and therefore, this encyclopedic knowledge is what Latin and Greek and Sanskrit also provide. Et illi ulterius progressi sunt, non solum intellexerunt hominem esse unum, sed totum genus humanum esse unum. Id est nos esse quasi membra corporis magni, sicut dicitur etiam sanscritice. Vasudhaiva Kutumbakam. Id est nos sumus una familia, et totum genus humanum est unum, non sunt vari. Nos tantum modo esquedam illusio sensum, sed praeter illam illusionem nos sentimus nos pertinere ad eandem radicem, et esse quasi flores diversos, qui ex eandem arbore proveniunt. So, and they did not just limit themselves to the idea that a person cannot be divided into parts, but they understood that all people from all around the world belong to the same family, belong to the same roots. They have the same roots, and we're all just like different flowers that come from the same tree, and therefore they have the same idea. Like in Sanskrit, we have Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is a family, and this is what the Latin and the Greek authors they felt and they cultivated as well. Et professor me docuit etiam adiut, esse varios gradus doctrine et scientiae. And this morning, Professor, he told something that there are different stages and different grades of learning and of science. Primus tantum gradus est cognoscere res. The first step is knowing, is to get to know things. Secundus, ille dicebat Paulo ante, secundus est intellegere res. The second grade, he was saying, is to understand things. Tertius est in usum cuius vitae transformare. And the third is to bring them to use, to apply them to the real life. Sed ultimus et supremus gradus est tradere alis, et sentire nos et alios unum esse, et benevolentia, caritate, amore, diffundere omnia quae nos potuimus etiam leviter aspicere. But the final and the most important step is to give it, is to transfer it to someone else, because that is how we diminish and we erase the distinction between us and others. And whatever we have achieved, whatever we have learned, we might be able to give to the future, to someone else.
et hoc possumus facere tantum modo si replemur caritate, amore, benevolentia, benignitate. And this we can only do if we are filled with love, with benevolence, with what we call caritas, which is a love for everyone. Et hoc modo poterimus perficere naturam nostram, quia homines non nascimur, sed fieri debemus. And in this way we complete our human nature, because we are not born as human beings, but we must become human beings. Et sine illa caritate, sine illo amore, sine illa benevolentia, nos possumus dicere etiam omnes linguas hominum et angelorum, sed nihil alium erimus, nisi cimbalitinientes, aut es resonans. And without this love, without this benevolence, without this love of all human beings, we might learn all the languages, all the sciences, all the knowledge there is to learn. It will be nothing except just sounding instruments and drums. So that this love, this benevolence is very important. Et ergo nos speramus multos vestrum possa venire in Italiam, multos nostrum possa venire ad vos, ut per hanc vicissitudinem et per hoc commercium lucis perficiamus nostram ipsam naturam humanam, et adiuvemus etiam homines qui nunc temporis videntur inclinari tantum modo ad conflictus varios, ad pugnas, ad prelia, ad bella. Et nos volumus contra lucem, benevolentiam, caritatem, benignitatem diffundere. And so therefore hope that many of you might come to Italy, and many of us might come to India, and we might exchange knowledge and understanding in this commerce of light, not of goods, not of money, but of light, of knowledge. And in this way we might also put ourselves against today's people, some of whom are so filled with conflict, with wars and with hatred, but we might oppose it with love and with exchange of knowledge and light. Ananda mansit apud nos 6 annos, si volueritis poteritis comeo colloqui, et ille cepit, ingressus est hanc viam, et fortasse multi ali sequentur, et id speramus hoc federe signati. Ananda stayed with us for 6 years, and I started this path, and the professor hopes that many of you so start and you go into this path. And many of us, many of the Italian students and the students from all over the world might come to India, learn Sanskrit and the Indian knowledge systems, and so we might go this path together. And I hope that this is what this memorandum of understanding might bring to us. Et hoc anno iam fortasse quidam discipuli venient, et praesertim nos ordinabimus hebdomadam indicam, ita ut possint multi professores etiam venire ad nos, et nos docere sapientiam millenariam, quae in hoc in ac terra continenti floret aducet viget. Well, this year maybe some students will already come to Italy from India, but also we are organizing a week of the knowledge system, so that the professors might come to Italy and they might teach us of this tradition, of this millenarian tradition of thousands and thousands of years of this great knowledge system that India has to offer, and that they might give it us. Kai bulamai kai Hellenisti kai te ton pala Helenophone anoigein kai legein yumin ten haran megalen en aistanomai te psyche. Hina humeis acuete kai ten fonenten ton Helenon he emin edoke olla kai ponto da pa erga kai ponto da pa erga tes anthropines tu anthropino genus. And now he is speaking in ancient Greek, and he would like to express his joy and his thankfulness in ancient Greek, also so that you might listen to this language of ancient Greek that also gave us great and beautiful gifts and rewards to the whole humankind, like philosophers like Plato and Aristotle. Thank you so much. अस्माकम् अनुबंध प्रक्रियां विधातुम् अस्माकं कुलसचिवा अत्यन्तं श्री गुरुभ्यो नमः। अत्यन्तम् आनन्दस्य गौरवस्य च अयं सुअवसरः यत् अन्ताराष्ट्रीयस्तरेपि संस्कृतस्य संवर्धनं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन
क्रियमाणम् अस्ति इति। अस्यामेव दिशि केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः तथैव रोमस्था अकेडेमिया विवर्यं नोवम् इत्यनयोः अनुबन्धपत्रे MOU मध्ये अद्य हस्ताक्षरं भविष्यति। It is a moment of great delight for all of us as the Central Sanskrit University is entering into a meaningful collaboration with Academia Vivarium Novum, Rome, Italy. Through a MOU aimed at promoting Sanskrit along with the classical languages Greek and Latin. So on this special occasion, I feel privileged to invite for signing the ceremony the Director of Academia Vivarium Novum, Professor Luigi Miraglia, and his esteemed colleague, Professor Ignacio Armela. अहम् अस्माकम् अन्तर्राष्ट्रीय विकासविभागस्य समन्वयकान् डॉक्टर नितिन जैन वर्यान् सादरम् अनुरुन्धे कृपया अनुबन्धपत्रस्य प्रक्रियां सम्पादयन्तु। पुनश्च अस्माकं मान्यान् कुलपतीन् तथैव कुलसचिवान् च सादरम् अनुरुन्धे। May this collaboration be a beacon of light for generations. अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कृते अयम् ऐतिहासिकः Mr. Anandvardhan, please come on stage. Anandvardhan Yopani. वयम् अत्यन्तं धन्यताम् अनुभवामः यत् वयम् अस्य ऐतिहासिकदिनस्य साक्षिणः स्मः। Thanks for holding please. पुनरपि एकवारम् अहम् अधिमञ्चं विराजमानानां धन्यवादं ज्ञापयामि। Now I am requesting Professor Ignacio Armela Chavez to come and give us special guidance and blessing. Sir, you are Professor of Philosophy and Vice President of Academia Vivarium now. And please translate of this speech Dr. Anand sir. Professor of Philosophy and of Advanced Latin Composition at the Academia Vivarium Novum.
He was born in Mexico City in 1986. He obtained a degree in classical philology from the National Autonomous University of Mexico in 2009 with a thesis on the death of Socrates according to Plato. Consecutively, he obtained his master's degree in letters at the Pontificium Institutum Altioris Latinitatis in Rome, with a thesis written in the Latin Coincidentia Oppositorum, quid Nicolaus Cusanus and Marcilius Licinus de Concordia Censerim, later published by Academia Vivarium Novum. Since 2010, he has taught history of ancient philosophy and advanced Latin composition at the Academia, an institution internationally renowned for its innovative methods for the teaching of classical languages and its endeavor of renewal of classical languages. As the vice president of the same institution, he contributes assiduously to its academic, cultural, and publishing activities, and has participated in several international conferences and courses, both as an organizer and as a speaker. Among his publications, there is a number of articles and contributions, being the most recent an essay on the urgency of classical education in the modern world, Quid Academia Vivarium Novum 2022. Thank you, Professor. Ego coque velim vos adloquiet in primis gratias agere hospitibus nostris, professoribus ad principibus cuius universitatis, qui ad nos invitaverunt et qui etiam nos tam lupulenter et tam humani exceperunt his diebus. Yeah, I would first like to thank the leaders of this institution and the professors who have been our hosts and who have invited us so graciously and hosted us at this wonderful event in university. Velim etiam gratias agere professori in Albane, etiam eius filio atque nostro discipulo Anandavardhan in Albane, quod potuerunt etiam interluntiorum vice fungi, ita ut hoc commercium imiri potuisset. I would also like to thank Professor Nopani and his son, so that because they were the intermediaries through which this memorandum of understanding first started to be brought into its ideas. Et ergo venim certe incipere dicens nos multum gavisos esse dum hic versamur in vestra terra, quae quidem nos commovit penitus in animo. Nos enim profecti sumus ex Italia, ut hic foedus quodam iceremus et etiam conventui interessemus, et invenimus amicos optimos et hospites vere splendidos. I would also like to thank all of you for the wonderful hospitality. We came, the hospitality that has completely moved us from the inside. We came from Italy to Nepal and India so that we would participate in a conference and that we would sign this memorandum of understanding. But we have also found great friends and most generous hosts, and we are most thankful to you for this hospitality. Profecti sumus in ex Italia, pauca quidem scientes, quid essemus hic inventuri, et cum hic iam adessemus ad novimus cultum sapientia atque eruditione antiquissimum atque reverendum. We came from Italy not knowing what we would expect to find in India, but when we arrived here, we saw this wonderful and living tradition of more than thousands and thousands of years that are bringing very splendid fruits and a very splendid culture which is still living. Et advenimus huc in Indiam, ut primum visuri as vestras terras, nunc vero profecturi, venimus aut nunquam proficisci, aut si ubi primum profectierimus, quam primum ad vos redire. We came here for the first time to India this time, but now as we leave, we have the desire to either not leave or as soon as we have left, to come back right away.
et hoc non est tantum modo propter pulcritudinem rerum quas spectabimus, sed etiam propter humanitatem quam in animis hominum percipere potulimus. Humanitas enim est illud vinculum, quod nos ex Italia venientes et vos hic in India versantes conjungit. Et est illud vinculum, quod speramus posse hoc foedere nostro, quam maxime foveri. And this is not only because of the beauty of everything that we have seen in India, but also because of the profound humanity that we have seen in each and every one of you in the inside. And this is the humanity that joins us that have come from Italy and you that are living in India. And we hope that through this agreement and through this understanding between the universities, this very humanity that resides between all of us might be developed and strengthened and bring beautiful fruits to the world. Speramus etiam foreut ali discipuli atque magistri academiae nostrae, hanc humanitatem indicam percipere possint, et etiam ut ipsi possint praevere tamquam donum atque symbolum, aliquod signum sapientiae illius atque philosophiae, quae iam pridem in plagis ad orientem solem versantibus floruit. And we also hope that students and other students in the academy in Italy might also come here and see this profound Indian humanity that you have and that you cultivate, and that they might also give you as a gift, as an exchange, a little sign of the humanity of the West that has been flourishing there for millennia as well. Hoc modo facientes poterimus ut speramus etiam summum officium humanitatis exequi atque operam dare, ut nunc temporis cum orbis terrarum indiget unitate convenientia amore et pace possimus nostrum quoque signum atque nostram partem conferre in hanrem. Nunc enim non opus est divisione, non opus est odio, non opus est philautia, sed potius opus est benevolentia, opus est amicitia, opus est etiam conspiratione animorum. And in this way we hope that we might the greatest duty of the humankind, which is to come together and to move in love and in unity. And we hope that this very agreement might give way for this profound unity and of love, and of a shared exchange of culture and of light, which I think needed in our times, when what is not needed is war, is separation, is battles, but what is needed is love and unity, which we hope that this collaboration will strengthen and build. Aristoteles enim Graece dicere solevat to on gen estin alla legetai polachos. Aristotle in Greek used to say to on polachos legetai alaistin hen. It is one, but it is said in different ways. Nos vero posmus una etiam dicere to anthropinon genos gen estin kai to auto alla faine tai on poikilon. We might say ourselves to anthropinon genos hen est kai polachos is to say that humanity, but it appears to be flourishing in different aspects and different colors. Kai diatuto est in calon to anthropinon genos, kai diatuto tu theiu ontos meteche, hoti est in gen alla poikilon. And that is why human is so beautiful. It participates in the divine because it is one, but it is also beautiful and has different colors. Ergo ultimum hoc dicam queso parcite mihi si forte in pronunciatione errabero. And I will say this last thing, and please excuse me, forgiveness if I make mistakes in the pronunciation. Jayato Sanskritam. Jayato Yawana Latinam. Jayato Manawatam. Thank you very much.
we are so thankful to Mr. Professor Ignacio Arveda and also thank you to Mr. Anandavardhan Yopane. अस्माकं MOU मध्ये यानि उद्देश्यानि निर्धारितानि सन्ति तेषां संक्षेपेण अत्र भवतां पुरस्तात् उपस्थापनं किञ्चित् क्रियते। अत्र अस्माकं MOU मध्ये 15 बिन्दवः सन्ति। तत्र उद्देश्यम् आधृत्य अस्माभिः अग्रे कार्यं विधास्यते। तत्र प्रथमं कार्यमस्ति एक्सचेंज द फैकल्टी, द्वितीयमस्ति स्टूडेंट एक्सचेंज विथ स्कॉलरशिप, तृतीयं जॉइंट पब्लिकेशन एंड रिसर्च, चतुर्थमस्ति वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस, पंचममस्ति एक्शन रिसर्च प्लान फॉर संस्कृत, लैटिन एंड ग्रीक। एवं अनेन सह अस्माभिः अनुसंधान विषये लिटरेचर, कल्चर, आर्ट्स एंड फिलॉसफी विषयेपि मिलित्वा संयुक्त तत्त्वावधानेन कार्यं करिष्यते इति अत्र एते बिन्दवः प्रामुख्येन निरूपिताः सन्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। भवन्तः अस्य कार्यक्रमस्य साक्षिणः भवन्तु, अतः भवन्तः सर्वेभ्यः वयं धन्यवादान् व्याहरामः। धन्यवादाः। सम्प्रत्येव अनुबन्धस्य उद्देशानि क्षेत्राणि च उक्तानि। क्रमेऽस्मिन् अहं सम्माननं कर्तुं निवेदयामि अस्माकं डॉक्टर कैलाश सैनी महोदयान्, अस्मासु विराजमानानां प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयानां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुख्यालये आचार्याः इमे अस्माकं शैक्षणिकवृत्तस्य सर्वमपि कार्यं पश्यन्ति, अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अहं निवेदयामि डॉक्टर कैलाश सैनी महोदयाः। इमे आचार्याः पूर्वम् अस्माकं मुम्बै परिसरे आचार्याः शिक्षाशास्त्र विभागस्य एवं च जम्मू परिसरे निदेशकः आसन्। सम्प्रति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुख्यालये अस्माकं शैक्षणिककार्यवृत्तं सर्वमपि पश्यन्ति, सर्वेषु परिसरेषु तत्र मार्गदर्शिकां प्रेषयन्ति, एवं च सर्वेषाम् अपि छात्राणां मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, समस्यायाः समाधानं च कुर्वन्ति प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयाः। एतेषां सम्माननं कुर्वन्तः सन्ति डॉक्टर कैलाश सैनी महोदयाः। भवन्तः सर्वेपि कर्तव्येन एतेषां सम्माननं कुर्वन्तु। एवं च क्रमेऽस्मिन् सम्माननं कर्तुम् अहं निवेदयामि डॉक्टर डमरूधर पते महोदयान्। अस्मासु विराजमानाः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः प्रोफेसर मुरलीकृष्ण महोदयाः। इमे आचार्याः पूर्वं मुम्बै परिसरे अस्माकं शिक्षाशास्त्र विभागे आचार्याः आसन्। अनन्तरं च मुख्यालयं गत्वा विविधेषु विभागेषु कार्येषु कार्यं कृतवन्तः। सम्प्रति अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः सन्ति। कुलसचिवः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वमपि कार्यं पश्यति, एवं च साक्षात् समस्यायाः समाधानं करोति। वयं झटिति एकां दूरवाणीं कुर्मः, तदा एते सद्येव अस्माकं सर्वासामपि समस्यानां निवारणं कुर्वन्ति। सम्प्रति सम्माननं कुर्वन्तः सन्ति डॉक्टर डमरूधर पते महोदयाः, अस्माकं कुलसचिव महोदयाः। भवन्तः कर्तव्येन एतेषां सम्माननं कुर्वन्तु। एवं च क्रमेऽस्मिन् अस्मासु विराजमानाः सन्ति आचार्याः प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन महोदयाः। एतेषां सम्माननं कुर्वन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर वर्खेडी महोदयाः, एवं च अस्माकं तत्र शिक्षाशास्त्र विद्यास्थानस्य अध्यक्षः प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदयाः। आचार्य जैन महाभागाः तत्र ग्रन्थलेखने प्रवीणाः सन्ति। एतेषां प्रावीण्यं प्रकाशने अस्ति। सर्वदैव एते लिखन्तः भवन्ति। अनेके ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। डॉक्टर जैन प्रोफेसर जैन आचार्याः अस्माकं सर्वेषामपि जयपुर परिसरे मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। सम्प्रति एतेषां सम्माननं कुर्वन्तः सन्ति अस्माकं अध्यक्षः शिक्षाशास्त्री विद्यास्थानस्य प्रोफेसर वाईएस रमेश महोदयाः, एवं च कुलपतयः प्रोफेसर वर्खेडी महोदयाः। वयं सर्वे धन्याः।